we were discussing about the shock. शॉक में हमने डिटेल्स किस शॉक की देखी? हाइपोवॉल्यूमिक शॉक. जो हमारा सारा डिस्कशन था वो हाइपोवॉल्यूमिक शॉक के ऊपर था. So when the patient, मैं जस्ट समराइज करूंगा इसको. When the patient is in the hypovolemic shock, how does the body react to compensate back to the normal the situation? Those mechanisms are known as the compensatory mechanisms. Okay. While at the same time that the shock is setting in the patient, certain other mechanisms also start getting activated, which tend to deteriorate the situation, and those are all positive feedback mechanisms. So ultimate outcome of a patient in hypovolemic shock will depend upon the balance of these two forces and in which stage the patient is at the beginning of the shock, because that is not predictable. Patient may be in the reversible, in compensated variety or in the irreversible stage. किसी भी stage में आ सकता है, हमें पता नहीं है. So we have to act accordingly. So body itself is trying to compensate for the hypovolemic shock, and these are the compensatory mechanisms. Neural reflexes, these through them we have already gone while learning about the blood pressure regulation. Most of these mechanisms, which are negative feedback mechanisms, are operating on the fast level. Negative feedback mechanisms are there and they are reflex in nature. So they are regulating basically the blood pressure so that the perfusion is maintained in the body. Baroreceptor reflex, chemoreceptor reflex and the CNS ischemic response. तीनों की डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. Then the humochemical mechanisms are there. Various hormones, chemicals and neurotransmitters are released during the condition of the shock also, and they try to correct the two disturbances which are found in the hypovolemic shock. What is the disturbance? Either there is an increase in the capacity or decrease in the volume. In the hypovolemic shock, we are concerned with the decrease in the volume only. But the compensatory mechanisms, they tend to compensate the decrease in volume by decreasing the capacity also. So that a balance of volume and capacity is maintained, blood pressure is maintained, and because of that, the cardiac output may be restored to the normal. These chemical substances which result into changes are catecholamines, which are not only released from the sympathetic nerve endings. Sympathetic nerve ending releases which neurotransmitter? Sympathetic postganglionic nerve fibers releases which neurotransmitter? Adrenaline and दोनों करते हैं. Good, बैठ जाओ. Anybody else who would like to answer? Neurotransmitter of the sympathetic postganglionic nerve fibers. It is norepinephrine only. Adrenaline is released from the adrenal medulla only. In the blood, the total catecholamines, if you found, 80% is adrenaline, 20% is noradrenaline, and both are released from the adrenal medulla, because those neurotransmitters which are released at the nerve endings, they do not find space in the blood stream at all. वो blood stream में नहीं आते usually, वो वहीं metabolize हो जाते हैं. So most of the catecholamines found in the blood, peripheral blood, are coming from the adrenal medulla, and they are acting on the smooth muscle fibers, causing vasoconstriction and increasing the heart activity, of course, resulting into the decrease in the vascular capacity. So catecholamines are causing decrease in the vascular capacity only. Okay. Then renin-angiotensin system is having both type of the effect. By causing vasoconstriction of the arterioles, meta-arterioles, it causes decrease in the vascular capacity, plus acting on the kidney, it enhances the sodium reabsorption, water reabsorption will be there, sodium water retention will be there, and volume replenished will be there. So renin-angiotensin system tend to correct both the parameters which are necessary for the correction. Similarly, aldosterone
mainly causes increase in the blood volume. It is not concerned with the vasoconstriction at all. तो ये कैपेसिटी को अफेक्ट नहीं करता, सिर्फ वॉल्यूम को इफेक्ट कर रहा है. Antidiuretic hormone affects only volume, plus in larger concentration. Mind it, ADH has got a differential effect in physiological concentrations in the body. Antidiuretic hormone acts as antidiuretic hormone. It acts on the kidney, helps in the reabsorption of the water. Okay, that is major physiological action. But in the conditions of the shock, or it is given from outside in the pharmacological doses, it has got an additional effect of vasoconstriction. It has got additional effect of vasoconstriction. That's why the same hormone is also called as vasopressin. Vasopressin भी कहते हैं, इसे इसीलिए कहते हैं क्योंकि स्मूथ मसल के कॉन्ट्रैक्शन करता है, especially in the blood vessels. So antidiuretic hormone in the pharmacological doses causes both decrease in the vascular capacity and increase in the vascular volume, blood volume rather. Then reverse stress relaxation occurs at the capillary level, small blood vessel level, where the blood vessels tend to contract around the reduced volume. जैसा वॉल्यूम बढ़ा दें तो वैसा धीरे धीरे स्ट्रेच होकर के डायलेट हो जाती है, तो बिना ज्यादा प्रेशर बढ़ाए वॉल्यूम अकोमोडेट हो जाता है. इसी तरह अगर वॉल्यूम घट गया है तो स्मूथ मसल धीरे धीरे रिड्यूस वॉल्यूम पे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जिससे कैपेसिटी कम हो जाए वैस्कुलर सिस्टम की. सो दिस इज रिवर्स स्ट्रेस रिलैक्सेशन इज देयर. And capillary fluid shift, as we know, the main mechanism of the fluid formation of the tissue is the capillary pressure, and of course other pressures are there, and ultimately there is the net filtration of the fluid. But if the blood pressure has fallen, the mean capillary pressure also falls, and all the forces at the capillary level tend to act in the reverse direction. So instead of the fluid getting filtered, fluid gets reabsorbed at the capillary level. So there is a net shift of the fluid from extravascular compartment to intravascular compartment, trying to replenish the volume of the blood. अरे ये किसको बेचैनी हो रही है? Then long-term mechanism we know acts at the kidney level, because whenever the shock is there, renal blood flow is reduced, renal hypoxia is there, renal capillary pressure has fallen, glomerular filtration rate will decrease, less water is going down through the tubules, so more and more will be absorbed, less will be excreted. There is a condition of oliguria, and sometimes in the conditions of the shock, there may be a complete renal shutdown. There is a complete renal shutdown का मतलब यह है कि यूरिन बनना बंद हो गया, कैपिलरी प्रेशर, ग्लोमेरुलर कैपिलरी प्रेशर इतना गिर गया कि फिल्ट्रेशन हो ही नहीं पा रहा, and that becomes a serious condition, because renal failure may be one of the conditions leading to death in the conditions of the prolonged shock. So kidney is trying to retain water by different mechanisms so that the volume is restored. Okay, and of course in the long term there is an increase in the gradual cell mass, because under the conditions of the shock, the patient is under continuous hypoxia. Patient is continuously facing hypoxia when the patient is in the shock, and if the hypoxia is there, then erythropoietin mechanism gets activated. More erythropoietin is released, more RBCs are produced by the bone marrow, and red cell mass increases. All things are to compensate for the condition of the shock. And if the patient is going into the irreversible stage, then these are the mechanisms which act as a positive feedback mechanism, causing deterioration of the condition of the shock. They are positive feedback. Cardiac depression we have talked about, continuous hypoxia, less coronary flow, because of that less forceful contraction of the myocardium, less ejection of the stroke volume, less coronary flow again. So a vicious cycle develops which continuously causes deterioration in the activity of the heart. अरे लड़के तो आपस में तो बाद में बात कर लेना, या बाहर चला जाए हैं? बच्चे तू उठ के इधर आजा, आजा आजा, तय हो गया, आगे बात नहीं करेंगे, फिर ठीक है. So
Cardiac depression is one condition. Then if there is a continuous hypoxia in the brain, there is a continuous excessive discharge through the vasomotor center. लगातार sympathetic activity बढ़ती रहती है. Ultimately neuron fails to discharge. There is a vasomotor failure. Sympathetic depression is there. There is vasodilatation throughout the body. Person bleeds within the blood vessels, and the shock condition worsens and goes into the irreversible stage. Then at the same time, there is release of the endorphins and enkephalins. They are decreasing the activity of the vasomotor center, causing the sympathetic failure. Acidosis, as I said, itself causing decrease in the contraction of the myocardium, as well as it decreases the effectiveness of catecholamines over the smooth muscle fibers of the blood vessels. So there is a decrease in the, or we can say passive decrease in the tone of the muscle is there, and that causes increase in the vascular capacity and causes worsening of the shock condition. Then sludging of the blood because of the decreased activity of the heart. There is slowing of the velocity of the blood flow that causes RBCs to tend to aggregate. Sludging is there, they tend to aggregate, form clots are there. तो ब्लड वेसल्स ब्लॉक होना शुरू होती है, तो उस शॉक की कंडीशन को वर्सन कर देती है और शॉक प्रोग्रेस कर जाता है. Then because of continuous hypoxia, of course, there is a change in the capillary permeability. Capillary permeability increases and more fluid from the intravascular compartment now gets shifted to the extravascular compartment, further decreasing the volume and further causing the vicious cycle and decrease in the, or rather the hypovolemia will be there and shock condition will become irreversible. Depressed reticuloendothelial system, decreased phagocytic activity, release of the toxins and from tissues, all are there, and there is a condition of less neutralization of the toxins by the neutrophils also. So accumulation of both endotoxins and exotoxins causes the deterioration of the condition of the shock in the patient, and all these lead to the depression of the heart activity. DIC, as I said, is a very serious condition. Disseminated intravascular coagulation occurs, and this has got a twofold effect. First is that because of the formation of intravascular clots, the smaller blood vessels are blocked, so tissue suffers more hypoxia, and as the coagulation is taking place, most of the coagulants present in the blood, they are used up, and because of the used up coagulants, their concentration in the blood falls. अगर coagulants की concentration blood में कम हो जाती है, then there is a tendency of spontaneous bleeding in the body. तो जिस काम को रोकने के लिए बॉडी में मैकेनिज्म चल रही थी, वो उल्टा पड़ रही है. कोएगुलेशन भी हो रहा है, उससे ब्लॉक हो रहा है, उसके अलावा ब्लीडिंग भी शुरू हो गई एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ लॉस ऑफ द कोएगुलेंट इन द बॉडी. सो दैट इज द कंडीशन ऑफ इनिशियल हाइपरकोएगुलिटी, यूज ऑफ द कोएगुलेंट, लेटर हाइपो एंड लीडिंग टू द bleeding mainly from the intestinal tract. That is condition of irreversible shock. Generalized cellular depression mainly because of the energy ATP is not there, sodium potassium pump fails, sodium accumulates in the cell, causes water retention, that causes intracellular edema, that is a serious condition again, will cause the deterioration of cellular function. Release of lysosomal enzymes leading to cell death, ultimately leading to the peripheral circulatory failure. कहते हैं PCF में चला गया मरीज, PCF का मतलब है कि सीरियस कंडीशन है बहुत ज्यादा, peripheral circulatory failure, and ultimately multi-organ failure, which is the just in the immediate condition before the death, multi-organ failure. ये सब हो गया. ट्रीटमेंट हम देख चुके हैं. बेसिक ट्रीटमेंट इज treatment of the causing condition. Causing condition was hypovolemia. So first thing is to correct the volume of the blood. ठीक है. Hypovolemia से hypoxia create हुआ था. So we have to correct the hypoxia also, because unless you correct hypoxia, acidosis cannot be corrected. Acidosis is linked with the hypoxia. So oxygen therapy. टेम्परेचर ऑफ कोर्स इज एसेंशियल. नॉर्मल टेम्परेचर होना चाहिए, शिवरिंग नहीं होनी चाहिए पेशेंट को. राइजिंग ऑफ द फुट एंड ऑफ द बेड हो गया. फ्लूइड रिप्लेसमेंट इज मेजर थिंग. ये किन में से कुछ भी अवेलेबल हो वो दिया जा सकता है. चॉइस डिपेंड्स अपॉन द अवेलेबिलिटी रादर.
अगर ब्लड अवेलेबल है तो और ब्लड लॉस हुआ है तो ब्लड देंगे। डायरिया डिसेंट्री हुए तो ब्लड नहीं देंगे, हम सलाइन देंगे उसके लिए। तो दैट डिपेंड्स अपॉन द पेशेंट कंडीशन कि किस वजह से हाइपोवॉलीमिया क्रिएट हुआ है। ऐसा नहीं है कि मल्टीपल परसिस्टेंट वॉमिटिंग करके पेशेंट आया और आप उसको ब्लड देना शुरू कर दोगे, ना, बिल्कुल नहीं देना, वो उल्टा पड़ जाएगा, वो नुकसान हो सकता है मरीज को। तो जिस वजह से हाइपोवॉलीमिया क्रिएट हुआ है उसको करेक्ट करना है हमें, दैट इज द मेन थिंग। एंड देन यू हैव टू इंक्रीज दी रादर डिक्रीज दी वैस्कुलर कैपेसिटी। पहला काम है वॉल्यूम को बढ़ाना। दो ही चीजों में डिस्टरबेंस हुआ है, या तो वैस्कुलर कैपेसिटी बढ़ गई है या वॉल्यूम कम हो गया है। तो हमारा जो ट्रीटमेंट का प्लान है, इन दोनों टू प्रोंग अटैक इज देयर। सो वी वांट टू इंक्रीज दी वॉल्यूम and we want to decrease the capacity. So vascular capacity can be decreased by using the sympathomimetic drugs. तो क्लियर कट हमारे सामने कि हमको क्या करेक्ट करना है, कैपेसिटी घटानी है, वॉल्यूम बढ़ाना है। वॉल्यूम रिप्लेसमेंट दीजिए, ऑक्सीजन दीजिए और वैस्कुलर कैपेसिटी को कम करिए कैटेकोलामाइंस यूज करके। इनको हम कहते हैं आइनोट्रोप्स कहते हैं इनको। एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एंड डोपामिन आइनोट्रोप्स। आइनोट्रोप्स के ऊपर मरीज को डाला हुआ, इसका मतलब ये हम इनका इन्फ्यूजन दे रहे हैं। दे आर ऑलवेज गिवन इन द ड्रिप फॉर्म, माइंड इट। कोई बहुत इमरजेंसी हो तो एड्रेनलिन का इंजेक्शन इंट्राकार्डियक देते हैं अगर हार्ट बंद हो गया हो तो, वरना यूजुअली डायरेक्ट इंजेक्शन नहीं देते, हम अवॉइड करते हैं। ये हम दे सकते हैं। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स आर ऑलवेज गिवन बिकॉज दे प्ले वेरी प्रोटेक्टिव रोल इन द बॉडी, वाजोप्रेसिन एंड अल्टीमेटली वेट एंड बॉडी। नाउ वी कम टू दी, ये मैंने इसलिए रिपीट किया कि ये छोटा सा टॉपिक है हार्ट फेल्यूर का, तो हमारा टाइम निकल जाएगा और शायद दोबारा थोड़ा समझ में आ जाए बताने से। तो टॉपिक इज द कार्डियक फेल्योर। ओके, हार्ट फेल्योर कह सकते हैं। द डेफिनेशन यू कैन सी, इट इज नॉट वेरी डिफरेंट फ्रॉम द शॉक। Pathophysiological state in which there is an abnormality of the cardiac function, so we have concentrated on the heart only। पहली बात, शॉक में बहुत सारे कारण हो सकते हैं, यहाँ पे हम सिर्फ, उसमें हार्ट का भी हो सकता है शॉक में, यहाँ सिर्फ हार्ट की ही बात कर रहे हैं हम। दैट इज द डिफरेंस। फंक्शन, इनएबिलिटी ऑफ द हार्ट टू पंप द ब्लड एट अ रेट एडुकेट फॉर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टिश्यू। शॉक में हमने कहा था इम्परफ्यूजन, इनएडिक्वेट परफ्यूजन द टिश्यू is the condition of the shock. Multifactorial reasons are there. Here the reason in the center is the heart itself, but the ultimate thing is same. Not adequate amount of the blood is flowing when the tissues or heart is not able to pump the required amount of the blood to the tissues, will lead to the condition of the heart failure. ठीक है? Occurs either due to decreased myocardial contractility of course, पूरा contract ही नहीं कर रहा, या इंक्रीज प्रेशर ओवरलोड, उसके ऊपर हार्ट के ऊपर वर्क का लोड बढ़ गया। तो इन दोनों कंडीशन में आइदर द पंप इज नॉट परफॉर्मिंग प्रॉपरली और द पंप इज एबल टू परफॉर्म बट द स्ट्रेस ओवर द हार्ट इज टू मच फॉर इट एंड इट ग्रेजुअली फेल्स, इट इज नॉट एबल टू डू इट। सो यूजुअल फिजियोलॉजिकल अल्टरेशंस अकर्स आर डिक्रीज इन द स्ट्रोक वॉल्यूम which lead to damming of the blood in the venous compartment। तो एक तरफ आगे ब्लड नहीं जा रहा और अगर पीछे डैमिंग हो रही है ब्लड की, दोनों ही कंडीशन में हार्ट फेलियर हो सकता है। इनका कंडीशन देखते हैं। So this heart failure can be either an acute condition or it can be a chronic condition। Acute का मतलब है कि किसी के अभी हार्ट अटैक आया, with a massive myocardial infarction involving large part of the left ventricle, then the patient may immediately go into the heart failure। Okay, so the most important cause of the acute heart failure is the myocardial infarction, or it can be a rupture of the valve। Rupture of the valve may be there or rupture of the aneurysm can be there। हार्ट में एन्यूरिज्म बन सकता है और वो रप्चर हो जाए तो हार्ट फेल हो जाएगा, बंद हो जाएगा बिल्कुल। सो सडन देयर विल बी a sudden decrease in the cardiac output leading to severe hypotension and therefore in the acute failure of course edema will never be there, chance ही नहीं मिलेगा edema होने का। chronic failure occurs over a long period of time। chronic failure में बहुत लंबा समय लगता है, वो chronic होता है
already slowly progressive disease. So chronic failure can be due to many reasons. Because of heart failure can be left-sided heart failure, or it can be a right-side heart failure. Right-side heart failure का मतलब है there is something wrong either in the tricuspid valve or the right ventricle or the pulmonary valve or the pulmonary circulation. इन जगह पे अगर प्रॉब्लम है then it can lead to the right heart failure. Left heart failure, if there is something wrong with the aortic valve, long aortic stenosis, long aortic regurgitation, continuous hypertension for long duration time, okay, or myocarditis of the left ventricle, all these can lead to the left heart failure. These are differences need to be noted clinically because the treatment profile for the left heart failure is entirely different than for the left heart failure, right. दोनों का अलग अलग है बिल्कुल, ये दोनों का कारण अलग है. So there is a difference between the right heart failure and the left heart failure. The major difference, of course, that in the right heart failure you will find edema in the dependent parts of the body. Fluid accumulation will be there in the dependent parts of the body. So right heart failure is characterized by dependent edema or the pedal edema. While the left side heart failure, the edema, if it is there of the dependent part, comes in a very long duration. बहुत बाद में आता है. Most important feature of the left heart failure is pulmonary edema. Lungs में edema होता है left heart failure में, generalized edema नहीं होता. Generalized edema right heart failure में ज़्यादा होता है. Then cardiac failure can be high output failure or it can be low output failure. मतलब आउटपुट ज्यादा है, नॉर्मल है तो भी हार्ट फेल है, कम है तो भी हार्ट फेल है, दोनों तरह का हो सकता है. In high output failure, heart pumps abnormally large quantities of blood to deliver adequate quantity of the oxygen. कब होता है देखिए, काफी कंडीशन कॉमन है. सीवियर एनीमिया, एनीमिया अगर है तो आपका there is a decrease in the oxygen carrying capacity of the blood. So 100 milliliter of blood is not able to carry 20 milliliter of the oxygen, क्योंकि है ही नहीं, इतने RBCs नहीं है आपके पास में कि ऑक्सीजन ले जा सकें. इसका मतलब per unit time more blood has to reach to the tissues to supply the required demand of oxygen. So heart has to pump more blood per unit time so that the required amount of the oxygen per unit time reaches to the tissues. So in case of the anemia, it is always a high output failure. जैसा मैंने हेमोडायनेमिक्स में बताया था, anemia is a hyperdynamic situation. Anemia is a hyperdynamic situation in the circulation. You can hear murmurs even. जो हार्ट में murmurs valvular defect की वजह से आती है, वो बिना valvular defect के भी अगर anemia है severe तो उसमें murmurs आ सकती है आपको. They are known as functional murmurs. They are known as slow murmurs or functional murmurs are there. So severe anemia, hyperthyroidism, again hyperdynamic situation is there. Beriberi, deficiency of the vitamin is there, heart gets dilated. Arterial fistula and Paget disease are some conditions which lead to the high output failure. Low output failure causes the failure of the pump itself, and the heart is not able to pump the blood. It is due to the low output failure due to myocardial contractility is decreased. Okay. Then third thing, there can be a forward versus backward failure. Backward failure usually occurs when the right ventricle is involved. Forward failure occurs when the left ventricle is mainly involved. Then another thing, it can be a systolic failure or it can be diastolic failure also. कई तरह के failure होते हैं. In systolic heart failure occurs due to the systolic ventricular dysfunction. Ventricle के दौरान हार्ट पूरा काम नहीं कर रहा है, ठीक है? Commonly seen in ischemic heart disease and due to dilated cardiomyopathy. मगर लेफ्ट साइड में मान लीजिए या राइट साइड में मान लीजिए, अगर लगातार इस्कीमिया आता है तो हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी घट जाएगी
और वो प्रॉपरली ब्लड पंप नहीं कर पाएगा, ग्रेजुअली लीडिंग टू द कंडीशन ऑफ द हार्ट फेलियर. ओके, दैट इज सिस्टोलिक. डायस्टोलिक फेलियर इज ऑल्सो देयर. Diastolic failure means the ventricles are not able to dilate or relax properly during the diastolic phase. You see, normal end diastolic volume is 120 milliliters. Okay, and there is a period during which the filling takes place. If the ventricle, either the right ventricle or the left ventricle, is not able to relax properly, then it will remain partially contracted. It means it will not be able to accommodate 120 milliliters of the blood during diastole. That capacity may be reduced. So that is called as the diastolic dysfunction. That is diastolic dysfunction. Ventricles are not able to relax properly, so end diastolic volume is reduced over a period of time. That reduced volume will lead ultimately to the reduced output by the left ventricle. Continuous reduction in the cardiac output will be there, and condition of the heart failure will ensue ultimately. So that is the diastolic dysfunction. So what are the changes occurs in the heart during failure conditions? अब इन सब में जो मैंने बात करी है वो मैंने तो बोल दिया, इस स्लाइड में कहीं नहीं आया कि वैल्वुलर डिफेक्ट से हार्ट फेलियर हो सकता है. ये जो स्लाइड जिस किताब से ली है मैंने, ये ऑथर्स अच्छी बना देते हैं, ये उन्हीं की बनी स्लाइड है, मेरा कोई लेना देना नहीं है इसमें. ये स्लाइड है मैंने नहीं बनाई, ये किताब से ली है, यूं की यूं मैंने. ठीक है, और इसमें कहीं भी वैल्वुलर डिफेक्ट का नाम नहीं है, जबकि ज्यादातर कारण में जो क्रोनिक हार्ट फेलियर होता है, वैल्वुलर डिसफंक्शन इज द मेजर कॉज ऑफ द हार्ट फेलियर. इफ द tricuspid valve is not functioning properly, tricuspid regurgitation is there, gradually it will increase load on the right ventricle. Right ventricle में लगातार लोड बढ़ेगा, क्योंकि ब्लड आगे जाने की बजाय राइट एट्रियम की तरफ ज्यादा पुश होगा अगर वाल्व प्रॉपर्ली बंद नहीं हो रहा है. Gradually the load on the right side will increase and will lead to the right side failure. Similarly, aortic regurgitation or aortic stenosis are major causes of the left side heart failure. So these valvular defects are one of the major causes of the heart failure in the person. और ये पहले, अब तो थोड़ा कम हो गया, पहले बहुत होता था. rheumatic heart disease is one of the important causes of the valvular heart disease. Rheumatic fever occurs usually in the children below the age of 5 years. उसके पहले ही होता है ज्यादातर, बाद में भी हो सकता है, कोई बाहर नहीं है, मगर ज्यादातर पहले ही होता है. And ultimately the patient used to die of the heart failure at the age of 25, 30, that's all. That was the condition. So pressure overload. Pressure overload will cause the left side heart failure mainly. अगर एओर्टिक प्रेशर मतलब हाइपरटेंशन अगर ज्यादा समय तक रहता है तो ग्रेजुअली लेफ्ट वेंट्रिकल फर्स्ट इट विल गेट हाइपरट्रोफीड. लेफ्ट वेंट्रिकल विल गेट हाइपरट्रोफी, क्यों ज्यादा काम करना पड़ेगा. आफ्टर लोड बढ़ा रहे हैं हम, आफ्टर लोड अगर लगातार बढ़ा रहता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल को ज्यादा काम करना पड़ेगा लगातार. ये हम पहले भी देख चुके हैं कि हार्ट को स्ट्रोक वॉल्यूम इजेक्ट करने में जितना ज्यादा नहीं चाहिए उतना ज्यादा प्रेशर को ओवरकम करने के लिए चाहिए होता है एओर्टा के अंदर. सो कंटिन्यूस हाइपरटेंशन विल लीड टू दी कंटिन्यूस लोड ऑन दी लेफ्ट वेंट्रिकुलर मसल दैट विल गेट हाइपरट्रोफीड. जब वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी उसका मसल मास धीरे धीरे बढ़ेगा, वेंट्रिकल की कैविटी कम हो जाएगी, वो आपका जो लैप्लास लॉ लागू हो जाएगा एंड हार्ट विल टेंड टू कंपेंसेट फॉर दैट. तो आउटपुट मेंटेन करने की कोशिश करेगा, मगर लॉन्ग टर्म में वो वापस डायलेट हो जाएगा और हार्ट फेल में चला जाएगा, वो डिकम्पेंसेट हो जाएगा. सो दैट इज द इनिशियल स्टेज लीडिंग कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी लेफ्ट वेंट्रिकल की होगी. ठीक है, देन दैट हाइपरट्रोफी will increase, change the wall stress again, will normalize the condition and ultimately hypertrophy and dilatation will take place leading to the left heart failure. तो ये चेंजेज हो रहे हैं वॉल थिकनेस में और वॉल्यूम में, और उसकी वजह से आपका लैप्लास लॉ अप्लाई हो रहा है, हार्ट कंपेंसेट करने की कोशिश कर रहा है, मगर अल्टीमेटली क्योंकि
जो कॉज है वो अभी भी मौजूद है, इसकी वजह से हार्ट धीरे धीरे फेल होता चला जाता। सो वन कंडीशन इज द प्रेशर ओवरलोड। द सेकेंड कंडीशन, ये सारा वो दे दिया क्या क्या हो रहा है इसके अंदर। द सेकेंड कंडीशन लीडिंग टू फेलियर इज वॉल्यूम ओवरलोड, क्योंकि ज्यादातर वॉल्यूलर डिफेक्ट आपका, वॉल्यूम ओवरलोड इज यूजुअली ड्यू टू द वैल्यूलर डिफेक्ट। So same change will be there of course, but in this case because volume overload is mainly seen on the right hand side, so the type of the hypertrophy observed in the ventricle is different. In case of left ventricular failure, the hypertrophy is concentric, मतलब चारों तरफ से बढ़ रहा है उसका, जबकि राइट साइड के अंदर हाइपरट्रोफी दैट इज एक्सेंट्रिक, एक तरफ बढ़ता है लोड और तरफ, हाइपरट्रोफी एक तरफ होती है, एक्सेंट्रिक होती है, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल में कॉन्सेंट्रिक हाइपरट्रोफी होती है। So ultimately the volume overload is continuous, then it will always cause gradual failure of the heart. Okay. फिजिक्स वही है इसमें, जो हमने उसमें देखी थी वो इसमें आ रही है। So what are the clinical features of heart failure? सबसे इंपॉर्टेंट क्या होना चाहिए? Beside other things we will come to them. Dyspnea. Dyspnea is difficulty in the breathing, difficult breathing, conscious आप हो जाएं breathing के लिए तो dyspnea कहलाता है। Painful breathing is dyspnea. And why this dyspnea is there? What is the cause of dyspnea in the heart failure? Because the heart is not able to meet oxygen demands of the body. But in most cases the dyspnea is of the respiratory origin. When the heart fails, then some fluid accumulates, because dyspnea is the common sign of left heart failure rather than right heart failure. When the left heart fails, when the left ventricle is not able to eject volume, then there is a gradual increase in the left atrial pressure. Gradually left atrial pressure बढ़ेगा. If the left ventricle is not performing properly, if it is failing, it means there will be damming of blood on the left side. Left atrial pressure will rise, and we know that the pulmonary veins does not have valves at all. So the pressure in the left atrium will be transmitted to the pulmonary circulation. Pulmonary capillary pressure will rise, and the rise in the capillary pressure in the pulmonary circulation will cause increased filtration of fluid into the interstitium of the lungs. There will be edema in the lungs. Interstitial fluid में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, interstitial edema होगा, alveoli में fluid आना शुरू हो सकता है, and that will decrease the diffusion capacity of the gases, lead to the hypoxia, and dyspnea will be there. Then the dyspnea, if the condition of the heart failure worsens, then dyspnea can get converted into orthopnea. Dyspnea पहले आता है ऑन एक्सर्शन, थाले बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, डिस्निया नहीं है, आप कोई काम करेंगे, एक्सर्शन किया, डिस्निया होने लग गया, दैट इज डिस्निया ऑन एक्सर्शन. देन डिस्निया एट रेस्ट कैन बी देयर, एंड व्हेन द डिस्निया occurs at rest, it means the condition has worsened, and that is known as the orthopnea or orthonia. And it is again because of more fluid filtration, increase in the thickness of the respiratory membrane, that causes decreased diffusion capacity, hypoxia, and dyspnea is there. Now this dyspnea can be paroxysmal also. पैरोक्सिस का मतलब जो अटैक, सडन आयर चले गए, सडन अटैक आयर चला गया, ऐसे फिनोमिना को हम पैरोक्सिस्मल कहते हैं. हमने हार्ट में भी देखा था, पैरोक्सिस्मल टैकीकार्डियाज होते हैं, अचानक एकदम से हार्ट बढ़ गई, 5-10 सेकंड बढ़ी हुई रही और अपने आप ही नॉर्मल हो गया. पैरोक्सिस्मल अटैक्स कैन बी देयर ऑफ द डिस्निया आल्सो और ऑफ द हार्ट रेट आल्सो. एरिथमियाज कैन बी देयर. Then in the lying down condition, patient is less comfortable, more dyspneic rather than the sitting condition. ये मरीज भी बताएगा आपको और आप टेस्ट भी कर सकते हैं.
कि जब लेटा हुआ होता है तो मुझे ज्यादा तकलीफ होती है सांस लेने में, बैठ जाता हूं तो तकलीफ कम हो जाती है। उसका सीधा सा कारण है, दो कारण है उसके। द बैक इज रिमूव फ्रॉम द सरफेस। अगर मरीज लेटा रहता है तो ये कांटेक्ट में रहता है, लंग्स में नीचे दबाव पड़ता है, उसकी वजह से फ्लूइड फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है, फ्लूइड इकट्ठा ज्यादा होता है, एक कारण। जो ही वो बैठता है उस कारण जो था वो हट गया आपका, तो उससे कम लोड पड़ेगा लंग्स के ऊपर। और दूसरा बड़ा कारण है कि बैठते ही लीवर नीचे चला जाता है थोड़ा सा वजह से, क्योंकि जो ही लेटेंगे अब लीवर प्रेस करेगा डायफ्राम के ऊपर, डायफ्राम पे प्रेस करेगा तो नीचे का जो इंफीरियर पोर्शन है लंग का वो कंप्रेस होगा, टोटल अवेलेबल स्पेस कम हो जाएगी रेस्पिरेशन के लिए, तो डिस्निया क्रिएट हो जाएगा। जो ही मरीज बैठेगा लीवर नीचे चला जाता है, ओके, और उसकी वजह से नीचे से प्रेशर डायफ्राम पे कम हो जाएगा तो डिस्निया रिलीव हो जाता है। तो इस तरह का जो डिस्निया होता है, माइंड इट, हम डिस्निया का डिस्कशन नहीं कर रहे, वैसे डिस्निया भी दो तरह का हो सकता है। इट कैन बी ए कार्डियक डिस्निया और रेस्पिरेटरी डिस्निया। यहाँ रेस्पिरेटरी की प्राइमरी प्रॉब्लम नहीं है, द पेशेंट इज नॉट सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम एट ऑल, द डिस्निया इज ऑफ द कार्डियक ओरिजिन। तो डिस्निया कैन बी कार्डियक डिस्निया और द रेस्पिरेटरी डिस्निया। तो हम, क्योंकि जो रेस्पिरेटरी डिस्निया है वो बैठने से फर्क नहीं पड़ेगा, उस पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, कारण उसके अलग है बिल्कुल। कार्डियक डिस्निया विल बी रिलीव्ड इन द सिटिंग posture or the standing posture, it will be aggravated in the lying down or the supine posture. Patient will feel fatigue, of course, and in the right heart failure, one of the important presenting feature of the patient is edema in the dependent parts of the body. In the left heart failure, edema may occur in the dependent part, but it will occur only at a very late stage when the fluid retention occurs because of the renin-angiotensin mechanism. वो mechanism जब काम आना शुरू होगी तो जो retention शुरू होगा, फिर जाके edema आएगा। So if the patient is presenting with the edema of the dependent part, dyspnea is there, consider patient is the heart disease, evaluate करिए, आपको पता लगेगा कि right heart failure है इसके अंदर। ओके, So right heart failure always gives dependent part edema, जिसको हम pedal edema भी कहते हैं। ये एक प्रोसीजर बताया edema देखने का। ये जो आपका मिडिल मेलियोलस है या शिन ऑफ द टिबिया पे है, ऊपर आए तो थोड़ा यहाँ आप दबा के देखेंगे तो वहाँ जहाँ अंगूठा दबाया आपने वहाँ पे खड्डा पड़ जाएगा, इसका मतलब ये पिटिंग ईडिमा है। ठीक है, ये ईडिमा देखने का तरीका, इससे ये पता नहीं लग रहा हार्ट का फेलियर हो रहा, ध्यान रखिए। कहीं आप ईडिमा देख के कह देंगे तो हार्ट फेलियर होगा, ऐसा नहीं है। यहाँ सिर्फ हम ईडिमा की बात करेंगे, कैसे देखते हैं वो। ठीक है, क्यों हमेशा 2 और 2 4 नहीं होते। ये आपका कुल मिला करके हार्ट फेलियर में ईडिमा क्या कारण हो सकता है। पहला ब्लड रिटर्न से लेना देना है, उसका कैपिलरी प्रेशर से है, और दूसरा फ्लूइड रिटेंशन से है बेसिकली। So fluid retention and increased capillary pressure both are leading to the edema. Liver is enlarged mostly in the right heart failure, not in the left heart failure. Right heart failure होगा, right atrium का प्रेशर बढ़ेगा, venous प्रेशर बढ़ेगा, पोर्टल वेन में प्रेशर बढ़ेगा, हिपैटिक वेन में प्रेशर बढ़ेगा, और लीवर में प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा, ग्रेजुअली लीवर एनलार्ज हो जाएगा। और जब लीवर एनलार्ज होगा तो फिर पोर्टल वेन में भी प्रेशर बढ़ेगा, और देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड इनटू द एब्डोमिनल कैविटी, जिसको हम एसाइटिस कहते हैं। एसाइट इज आल्सो ए लेट प्रेजेंटिंग फीचर ऑफ द राइट हार्ट फेलियर अलोंग विद द पीडल इडिमा, मगर बाद में आता है वो। पहले पीडल इडिमा आएगा, बाद में एसाइटिस आएगी। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर ऑफ द राइट हार्ट फेलियर। इंक्रीज central venous pressure, which has been written as jugular venous pressure, क्योंकि जुगुलर वेन में ही देखते हैं इसे। और कैसे देखते हैं उसका डायग्राम बड़ा अच्छा है। See, in this you can see that this is the external jugular vein. Normally you don't see it filling it up to this level. किसी में भी आप में यहां तक ये वेन बैठे हुए में भरी हुई नहीं दिखेगी, भरी हुई दिखनी भी नहीं चाहिए। ये यहाँ जो आपका ये जंक्शन है, स्टेनोक्लेविकुलर जंक्शन,
यहाँ से ये अंदर घुस रही है, ठीक है। यहाँ से जरा सी ऊपर दिख जाए तो दिख जाए वेन भरी हुई, नॉर्मली बैठे हुए में दिखनी नहीं चाहिए। और अगर मरीज लेटा हुआ है तो पूरी भरी हुई दिखेगी, यहाँ तक पूरी दिखेगी, क्योंकि ये वेन सब हार्ट की लेवल पे आ जाती है तो प्रेशर बराबर हो जाता है, तो वेन भरी हुई दिखेगी। So if the vein is filled in the sitting condition above 1 centimeter above or 2 centimeter above the joint, then it is indicative of increased central venous pressure, indicative of right heart failure. So this patient is suffering from the right heart failure. If he is not doing or increasing the intrathoracic pressure, मैं बैठे नॉर्मल आदमी में मैंने यूं दबा दिया, प्रेशर बढ़ा रहा हूं तो ये बढ़ जाएंगी, ज्यादा फिलअप हो जाएंगी, वो ना करें। मरीज नॉर्मल होना चाहिए। बैठे हुए में अगर ये भरी हुई दिखती है, गलत है, ये नहीं भरना चाहिए। और देखने के लिए द पोजीशन इज दिस वन, दिस इज द एग्जैक्ट क्लिनिकल मैकेनिज्म और प्रोसीजर टू फाइंड आउट द फिलिंग ऑफ द नेक वेन्स एंड द सेंट्रल वीनस प्रेशर। मरीज को 45 डिग्री पे थोड़ा रिक्लाइन करेंगे और फिर ये वेन्स देखेंगे कितनी भरी हुई है। अगर रिक्लाइनिंग पोजीशन में 1 सेंटीमीटर तक जा रही है कोई दिक्कत नहीं, उसके अगर ऊपर ये भरा हुआ दिख रहा है, इसका मतलब राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ा हुआ है, राइट साइड हार्ट की फेल हो सकती है। सो इंक्रीज्ड सेंट्रल वीनस प्रेशर और जुगुलर वीनस प्रेशर इज इंडिकेटिव ऑफ द राइट हार्ट फेलियर। लेफ्ट का बिल्कुल नहीं है, ध्यान दीजिएगा। लेफ्ट वेंट्रिकल हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिस प्रेशर एट ऑल।